Hey guys, welcome back to my channel. In today's video, you will learn some more objective questions along with their answers that could be asked in your AIB exam. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो. Question number 1. Which of the following articles of the Indian Constitution prohibits discrimination in employment in any government office? अर्थात भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार में भेदभाव पर रोक लगाता है? आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 12, ऑप्शन सी आर्टिकल 15 या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 16. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. Because Article 16 of the Indian Constitution prohibits discrimination in employment in any government office. This article says there shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the state. No citizen shall, on the grounds of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them, shall be ineligible for or discriminated against in respect of any employment of office under the state. आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की. In the context of the Indian Constitution, which of the following articles guarantees the right to freedom of religion to its citizen? अर्थात भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 25, ऑप्शन सी आर्टिकल 32 या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 22. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. Because Article 25 of the Indian Constitution guarantees the right to freedom of religion to its citizens. It provides freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. It is a basic human right guarantee that cannot be subverted or misinterpreted in any manner. Article 25 to Article 28 of the Indian Constitution deals with the rights to freedom of religion. आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. Equality before the law of equal protection of the laws within the territory of India is guaranteed under which one of the following articles of the Constitution of India? अर्थात भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों की समान सुरक्षा के कानून के समक्ष समानता की गारंटी दी गई है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 15, ऑप्शन सी आर्टिकल 16 या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 22. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. Because the Constitution of India codifies the fundamental rights of the basic human rights of its citizens, which are defined in Part 3rd of the Constitution. One such right is the right to equality, which is protected under Article 14 to 18. Article 14 is the most significant of the lot. The state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. This means that every person who lives within the territory of India has the equal right before the law. Article 14 constitutes of two parts. Part 1 है equality before law and the part 2 is equal protection of law. आइए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की. Match list 1 with list 2 and select the correct answer from the codes given below in the list. अर्थात सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनें. और वो दो सूचियां हैं ये. पहली सूची जो बात करती है ऑप्शन ए की एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, बी फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, सी protection of language and minorities,
डी राइट टू एजुकेशन। जबकि लिस्ट 2 बात करती है नंबर 1 आर्टिकल 29, नंबर 2 आर्टिकल 21, नंबर 3 आर्टिकल 18 एंड नंबर 4 आर्टिकल 26। अब आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए A3 B2 C1 D4, ऑप्शन बी A4 B3 C2 D1, ऑप्शन सी A3 B3 C4 D1 या फिर ऑप्शन डी A3 B4 C1 D2 and the correct answer of this question is option D, because Article 18 deals with the abolition of titles, जो बात करता है no title not being a military or academic distinction shall be conferred by the state. No citizen of India shall accept any title from any foreign state. जबकि Article 21 deals with the right to education. This article states that the state shall provide free and compulsory education to all the children falling between the age group of 6 to 14 in such manner as the state may by law determine. आगे कहता है the 86th amendment to the Constitution of India in 2002 provided the right to education as a fundamental right in part 3rd of the Constitution. Tapas Majumdar Committee 1999 was set up which encompassed the insertion of the Article 21A. वहीं Article 26 deals with the freedom to manage religious affairs, which means to administer such property in accordance with the law, to own and acquire movable and immovable property, to manage its own affairs in matters of religion, to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes. Next, हमारा Article 29 deals with the protection of language of minorities. वह बात करता है any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. आगे बात करता है कि no citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state receiving aid out of state funds on grounds only of the religion, race, caste, language or any of them. आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। The 74th amendment of the Indian Constitution is related to which of the following? अर्थात भारतीय संविधान का 74वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पंचायत राज, ऑप्शन बी पॉलिटिकल पार्टी चेंज्ड, ऑप्शन सी अर्बन लोकल इंस्टीट्यूशंस या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. And the correct answer of this question is option C, because the 74th amendment of the Constitution is related to the urban local institutions. The 74th Constitutional Amendment Act mandated the setting up and devolution of powers to urban local bodies, जिसे हम abbreviated form में ULBs कहते हैं, और city governments as the lowest unit of governance in cities and towns. आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की. द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिफ्लेक्ट्स द माइंड एंड आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर्स इज, अर्थात संविधान का वह भाग कौन सा है जो निर्माताओं के मन और आदर्शों को दर्शाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट्स हैं, ऑप्शन सी प्रियम्बल है, ऑप्शन डी सिटीजनशिप है. And the correct answer of this question is option C, because the part of the Constitution that reflects the mind and ideals of the framers is preamble. The ideals embodied in the objectives resolutions are faithfully reflected in the preamble to the Constitution. It summarizes the aims and objects of the Constitution. The preamble to the Indian Constitution is based upon the objectives resolutions drafted and moved by Pandit Nehru and adopted by the Constituent Assembly.
आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8, आर्टिकल ब्लैंक of the Indian Constitution deals with the protection of life and personal liberty। अर्थात भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 16 या फिर ऑप्शन डी 21। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। Because according to Article 21 of the Constitution, no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by the law. This right is available for citizens as well as aliens. This article includes the right to live with human dignity. It covers the protection against arbitrary executive and legislative action. It is the part of the basic feature of the Constitution. It can be taken away according to the procedure which is established by the law. आइए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। Which of the following statements about the Constitution of India is/are correct? अर्थात भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन 1, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन 2 है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी इन हिज कैपेसिटी एज द लॉ मिनिस्टर। Now friends, you have to select the correct answer using the code given below। और आपके कोड एंड ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1 only, ऑप्शन बी 2 only, ऑप्शन सी both 1 and 2, ऑप्शन डी neither 1 nor 2। And the correct answer of this question is option B, because objective resolution was moved by Jawaharlal Nehru on 30th December 1946. It was unanimously adopted by the Constituent Assembly on 22nd January 1947. On 29th August 1947, the drafting committee was set up by the Constituent Assembly under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar served as the chairman of the drafting committee in his capacity as the law minister. The Constitution of India came into force on 26 January of 1950. आइए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। In which article of the Constitution the adult suffrage is recognized? अर्थात संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए आर्टिकल 324 में, ऑप्शन बी आर्टिकल 325 में, ऑप्शन सी आर्टिकल 326 में या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 327 में। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, because Article 326 of the Constitution, the adult suffrage is recognized. Article 326 of the Constitution provides that the elections to the House of the People and to the Legislative Assembly of every state shall be on the basis of adult suffrage। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। Which of the following Amendment Act of the Constitution deleted the right to property from the list of fundamental rights? अर्थात संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 37th Constitution Amendment Act 1975, ऑप्शन बी 38th Constitution Amendment Act 1975, सी 44th Constitution Amendment Act 1978 या फिर 42nd Constitution Amendment Act 1976। And the correct answer of this question is option C, because the 44th Constitution Amendment Act 1978 deleted the right to property from the list of fundamental rights. After this amendment, right to property is no more a fundamental right, only a legal right of an individual.
There were 7 categories of fundamental rights in the original constitution. The 44th Constitution Amendment Act reduced the number of fundamental rights from 7 to 6. At present, there are 6 categories of fundamental rights in the Indian Constitution. The right to property was listed under Article 31 before its deletion. At present, right to property is listed under Article 300A as a legal right. So thank you friends, I hope this video will be useful for you. If yes, do like, subscribe and share my channel, and also hit the bell icon to get the latest updates of all my upcoming videos. So bye, ciao, sayonara and sabba khair.